हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। ये वीडियो में सिंपल एक जीएसटी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है। देन लेट्स स्टार्ट। GST aim to increase our revenue by being a designation based tax, thus eliminating tax on tax. जीएसटी का आने का मेन पर्पस टैक्स ऑन टैक्स जो लगता था उसे एलिमिनेट करना है। अब एक बार जीएसटी चार्ज हो गया तो बार बार उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। Input tax credit is a cash account of GST which needs very clear understanding. Priority could be given to understand input tax credit, place and time of supply, and transaction provision in the effort to gain benefits of GST. Most of taxpayers under earlier state law like VAT, central law like central excise, service tax must have already been registered with GST by now. जो पहले CST law, सेंट्रल एक्साइज लॉ, सर्विस टैक्स लॉ में रजिस्टर थे, नाउ अब वो कन्वर्ट हो गए। अब उन सबको अपने जीएसटी के अंडर में रजिस्टर करवाना होगा और सबका ऑलमोस्ट हो गया है। They must have discovered how easy, convenient and efficient GST is provided. We align our system, process and records with GSTINL. अब सारे GST के जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक किया जाएगा GSTINL. Want to reduce cost? Understand input tax credit equals to IGST means interstate goods and service tax, CGST central goods and service tax, SGST state goods and service tax प्लस रिवर्स चार्ज। इन सबको ऐड किया जाएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा कंपोजिशन लेवी स्कीम, क्योंकि उस पर कंपोजिशन लेवी पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का रूल एप्लीकेबल नहीं होता। जो भी कंपोजिशन लेवी स्कीम की कैटेगरी में आते हैं जिनका टर्नओवर 50 लाख से लेस देन है तो उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए हमने इसको लेस कर दिया है। चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू रजिस्टर टैक्सेबल पर्सन। RTP मतलब रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन कैन यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे हिज आउटपुट टैक्स ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। तो जनरली हिज आउटपुट टैक्स ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड taxable goods and services. Registered taxable person can take credit of input tax charge on any supply of goods or services to him which are used or intention to be used in the course of furtherance of his business. Intention and furtherance are new and wider terms. Goods mean all movable property including those capitalized and actionable claim. Movable property. Services means anything other than goods. Business has a wide definitions including any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager or any other similar activity, whether or not it's for a pecuniary benefits. Business especially includes supply or acquisition of capital assets, including goods and services, to build capital assets, except building. Even one-time activity of this would come under GST as casual taxable person. All registered taxable person, including RTP making zero rated supply, for example exporter, but credit of input tax credit except RTP. RTP मतलब रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा एक्सेप्ट फॉलोइंग। अवेलिंग जो भी कंपोजिशन स्कीम की कैटेगरी में आते हैं उन्हें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेकिंग एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी होगा उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन 3 पॉइंट्स पर आईटीसी का बेनिफिट नहीं है।
रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को। क्लियर? Credit balance in earlier bank account to be transferred. Sandwich and VAT return filed before appointed date are very critical. Sandwich and VAT credit in same to be taken forward into GST. While filing last sandwich and VAT return, we need to cross check with accounts and physical stock. जो पहले जो भी बैलेंस रखा होगा सैंडविच क्रेडिट में, तो सबका एक फिजिकली स्टॉक चेक किया जाएगा। तो फिजिकल स्टॉक क्यों चेक किया है? क्योंकि कितना हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक में आया, फिर कितना उसमें से बन के आउटवर्ड हुआ, तो उसी पे तो सैंडविच क्रेडिट का कैलकुलेशन होगा। क्रेडिट एलिजिबल अंडर सैंडविच वैट जीएसटी आर रिकॉर्डेड इन सैंडविच रिटर्न। All credit eligible concurrently under sandwich, VAT and GST can be carried forward into GST. Example, इंश्योर सी और एफ फॉर्म। सी फॉर कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी के लिए हम सी फॉर्म इशू करते थे, एफ फॉर्म हम स्टॉक ट्रांसफर पर्पज से इशू करते थे। अंडर CST सेंट्रल सेल्स टैक्स आर filled as credit would may not be available. Ensure VAT return are filed within 90 days from appointed date. Credit on stock, work in progress and capital goods at appointed date. Complete inventory of stock and WIP at appointed date to be compared with books. ठीक है? To check if sandwich and VAT credit in stock and WIP eligible under all three law is carry forward into GST. Valuation of stock and WIP needs to be evaluated to ensure eligible credit is taken into GST. Unutilized credit on capital goods other than building can be carried forward. No commercial reason but input tax credit cannot be taken on the following items. Let's see. Motor vehicle. Unless used for further supply of vehicle, transportation of passengers or goods, driving और ट्रेनिंग स्कूल्स, तो इनमें हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। सेकंड, फूड, बेवरेजेस, हेल्थ सर्विसेज, ब्यूटी, cosmetic treatment unless used for making an outward supply of same, even when required and provided to employee by any law like Factories Act, तो आईटीसी का फायदा नहीं दिया जाएगा। क्लब मेंबरशिप, rent a cab, life insurance, health insurance unless statutorily required. Okay, clear? In the following conditions में ITC credit not taken. LTA to employees, goods, services used in constructions of immovable property other than plant and machinery. Immovable, plant and machinery, movable math, immovable property. Goods given as free sample, gifts, lost or destroyed. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉट क्लेम विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, अगर विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स ऑफ इनवॉइस, जब आपने टैक्स इनवॉइस क्रिएट किया उससे विद इन 1 year में आपके पास टाइम है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठाने का। अगर आप उस टाइम पीरियड में नहीं करते तो आपका टाइम पीरियड लैप्स हो जाएगा और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। होप इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल ऑन सर्विसेज लाइक व्हीकल इंश्योरेंस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। Input tax credit on capitalized goods including renovation is allowed in same year except, okay, same year, बहुत important point है, input tax credit on capitalized goods including renovation is allowed in same year but except following. If depreciation is claimed under Income Tax Act 1961, building and civil structure, pipeline and telecommunication tower, pipeline and telecommunication tower, 1/3 is allowed in first year, 1/3 is second year and balance in subsequent year. Clear? Thus, input tax credit on renovation or addition to capital asset is allowed. If capitalized ELSC, it would be disallowed. Can we claim input tax credit on capital goods used for supply exempt goods or non-business? Answer is no, because it's exempt goods. तो exempt goods पे नहीं होगा, taxable goods पर applicable होगा आपका input tax credit benefit. Is that clear? How to take input tax credit? RTP means registered taxable person for taking ITC shall ensure. इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसे ही नहीं मिल जाता, हमें हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। और क्या प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट,
He is in possession of tax invoice, must है tax invoice और debit note issued by a supplier मतलब registered taxable person. Has received the goods services if goods received in lot on receipt of last lot, ITC not available on advance. Supplier has uploaded his return with correct invoice details and paid GST on time. तो ये सारे conditions fulfill होना जरूरी है. Then you claim input tax credit. He has furnished the return under section 34. He had supplier of services within 3 months. He paid supplier of services within 3 months of the date of invoice. Else input tax credit will be reversed and interest paid on ITC reversed. He has not claimed depreciation under income tax act. अगर आपने depreciation claim किया है तो आपको ITC नहीं मिलेगा. अगर आपने नहीं किया है तो मिलेगा. मतलब दो एक साथ दो फायदे नहीं दिए जाएंगे. There's expiry date even for life? Yes. Input tax credit must be availed before September of the following financial year to which invoice pertain, date of filing of annual return whichever is earlier. For example, बिल्कुल ध्यान से देखिए, फाइनेंशियल ईयर मार्च 18 मतलब 1 अप्रैल 17 to 18, ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न इज December 18. If invoice date 15 January 2018, invoice date, ठीक है, input tax credit needs to be availed 20 October 2018. Clear? Unless annual return is filed before 20 October 18, if annual return is filed before 20 October 18, then date of filing annual return. Check signing is given to trusted people. Few enlightened persons consider input tax credit as bank account efficient. Availing credit and utilization of input tax credits is left for historical reporting of internal auditor, leaving the government reader. A proactive planning and understanding GST procedure could be beneficial. Input tax credit can be used for making payment of GST. Input tax credit can be used for making payment of GST on output but not interest, but not for penalty, but not for fee and reverse charge. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूज ओनली फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन आउटपुट but not interest, penalty, fee and reverse charge. Penalty, there is no time limit on utilization of input tax credit, but there is a provision for giving time limit in GST. Balance input tax credit account may be refunded in case of export or rate of tax input is higher than output. Is there really free flow of input tax credit? We all know. देखिए, input internal goods and service tax IGST, integrated goods and service tax balance is used for first payment of IGST, second payment of CGST, balance payment of SGST. अगर IGST में GST का कुछ भी अमाउंट रिमेन होगा तो CGST में यूज होगा, कुछ बैलेंस बचा फिर SGST में यूज होगा. CGST balance used for first payment of CGST, balance payment of IGST. Same thing, SGST balance is used for first payment of SGST, balance payment of IGST. Can arrear under earlier law be paid using ITC? No. GST can be used to pay tax under GST law. Can IGST, CGST, SGST balance in one state to be used to pay output liability in another state? No. Presently, there is no mechanism for such set of credit. GST credit is available only on matching accepting concept by customer of every supplier invoice. We need to wake up and upgrade our ERP records to run alongside GST and goods and service tax network.
Then friends, thank you for watching my this video. If you like my this video, then don't forget to like, share with your friends, and please don't forget to subscribe my this video. And take care. Bye.